So good morning students. Now let's start our video. Okay. Now in this video we shall continue our chapter number 5, that is minerals and energy resources. Is that clear? The previous video that we have seen on Facebook was on the chapter 1 for the students who had missed their topics. Now in this video we shall continue our chapter number 5, that is minerals and energy resources, and in this video we shall discuss our next topic, that is the conservation of minerals. So please check out page number 57 in your textbooks. Page number 57. Now we shall start this topic. Now beta, before we shall start this topic, first of all write down the question. Please write down the question. What is meant by the term conservation of minerals? What is meant by the term conservation of minerals? What is the need for it? What is the need for it? ठीक है जी, what is meant by the term conservation of minerals? What is the need for it? For 1 marks, for 3 marks, or for 5 marks? चलो. Now beta, please see here. The question is what is meant by the term conservation of minerals and why do we need it? Now first of all we see that why do we need it. देखो बच्चों, we all know that minerals are not infinite, these are finite, ठीक है, and it takes millions of years to form these minerals. So that is why there is an urgent need to conserve all these minerals, because if we continuously indiscriminately use these minerals and continuously do so, then very soon within next 100 to 200 years all of these minerals will get exhausted. Then if all of the minerals get exhausted, then what will we do? What will be the alternative for it? We don't have any further alternative for it. So that is why it is our urgent responsibility, it is an urgent need for us to conserve these minerals, because it takes millions of years to form these minerals. And that is why there is an urgent need to conserve these minerals. Also, second point, these minerals are not infinite. These are finite. ठीक है ना, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं. ये इनफाइनाइट नहीं है, ये नहीं कि चलते जा रहे हैं. These are not infinite, these are finite, और that is why we must conserve these minerals so that they can last for a longer duration. कभी ना कभी तो ये खत्म होंगे ही होंगे, definitely होंगे, but we should try that as long as they can last, we should try for that, कि जितने लंबे टाइम तक ये बने रहे उतने लंबे टाइम तक लिए हमें कोशिश करनी है. That is why there is an urgent need for the conservation of minerals. Is that clear, students? Now we have already discussed the question that what is meant by the term conservation of minerals. The meaning of this conservation of minerals is to use the minerals in a systematic manner. Write down please. लिख लो. I think you have written all this. ठीक है? This was the answer for the need of the conservation of minerals. The first question was what is meant by the term conservation of minerals. तो उसका आंसर क्या बनेगा? देखो. What is meant by the term conservation of minerals? It means to use the minerals in a systematic manner. That means do not use these indiscriminately, so that these can last for a longer period of time. ठीक है जी बच्चों, this is for a longer period of time. This is meant by the term conservation of minerals. ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि what is meant by the term conservation of minerals. This is the answer. और जो पहले लिखा था आंसर, that was the answer for what is the need for it. भी जरूरत क्यों है हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की. Is that clear, students? I think you have got all of this. ठीक है, you have understood the answer. Next topic is बच्चों, हाँ, please write down next question. How can we do the conservation of minerals? Very important question for 3 marks or 5 marks. How can we do the conservation of minerals? Write any 3 points. How can we do the conservation of minerals? Write any 3 points. चलो, I'm rubbing it now. ठीक है?
चलो देखो बच्चों, प्लीज अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक्स पेज नंबर 58. अंडरलाइन इन योर बुक्स. फर्स्ट पॉइंट, हाउ कैन वी डू द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स? Number one, by improved technologies. Please write down, yeah, and underline improved technologies. This is a very important point. Improved technologies मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा नई से नई टेक्नोलॉजी निकालनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम लोग मिनरल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, उसका वेस्टेज घटेगा. इंप्रूव टेक्नोलॉजी से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? द रिडक्शन इन वेस्टेज. रिडक्शन इन द वेस्टेज ऑफ मिनरल्स. इसकी रिडक्शन इन द वेस्टेज ऑफ मिनरल्स एंड ओवरयूज ऑफ मिनरल्स. इन दो चीजों में कमी है. एंड ओवरयूज ऑफ मिनरल्स. अगर हम लोग नई से नई टेक्नोलॉजीज बना लेते हैं, इंप्रूव टेक्नोलॉजीज बना लेते हैं, दिस विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज ऑफ मिनरल्स एंड ऑल्सो इन द ओवर यूज ऑफ मिनरल्स. जिससे क्या होगा? द मिनरल्स विल लास्ट लॉन्गर. एंड दैट मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स विल टेक प्लेस. ठीक है जी बच्चों, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, दैट इज इंप्रूव टेक्नोलॉजीज. नेक्स्ट, नंबर 2. अंडरलाइन प्लीज बच्चों. नेक्स्ट, नंबर 2 देखो, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स. नंबर 2, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स. अब इसमें समझ लो क्या, व्हाट इज दिस? दैट मीन्स टू यूज वन मिनरल इन मोर देन वन ways. That is to use one mineral in a different ways. That is known as recycling of metal. Suppose I am having any mineral, ठीक है, I have used that mineral in making any substance, ठीक है, in any substance. Now whenever that substance is not required to me, then I can melt down that mineral that mineral, or I can give any other shape to that metal and can recycle it in this way and can use it. So in this way, this recycling of metals can also help in the conservation of minerals. That means the minerals will last longer. ठीक है जी. तो recycling of metals, it again helps in the conservation of minerals. It means to use the minerals in different ways. एक ही मिनरल को अलग अलग तरीके से बार बार यूज करना. ठीक है, ये नहीं कि आपने एक बार एक मिनरल को यूज कर लिया, अब उसका कोई यूज नहीं रहा. नो, आपको एक टाइम पर एक मिनरल चाहिए था, आपने यूज कर लिया. उसके बाद जब उसकी उस चीज में यूजेज नहीं रही, तो उसी मिनरल को कोई और शेप देकर किसी और फॉर्म में और कोई तरीके से आप यूज कर सकते हो. इससे क्या होगा? आप एक ही मिनरल को बार बार यूज कर रहे हो, जिससे क्या होगा? आपकी और ज्यादा मिनरल्स को बाहर निकालने की, और ज्यादा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो नीड है ना, वो घटती जाएगी. और अगर आपकी नीड घटती जाएगी, तो मतलब आप ऑलरेडी धीरे धीरे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल करना शुरू कर दो, जिससे क्या होगा? योर मिनरल्स विल लास्ट लॉन्गर for a longer duration. That is why we are saying that recycling of these metals will help in the conservation of metals. Is that clear? Next, number 3. Please underline number 3 also. Okay. Other substitutes are okay. इसका यूज, इसमें पॉइंट लिखो, usage of other substitutes. The usage of other substitutes. This is also an important point for the conservation of minerals. Now, how it is an important point? यहाँ पे ना बड़ा अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो. कोल का. That is thermal power generation का. I will explain it everything. Thermal power generation. Now, थर्मल पावर जनरेशन. अब मेरे को बताओ, क्या कोल से ही सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? ओनली विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? नो, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद अदर सब्स्टिट्यूट्स आल्सो. Suppose we can also generate electricity from hydroelectric power. We can use solar energy. We can use wind energy. ठीक है ना? We can use biogas energy. So that means we can reduce our dependence on these minerals
We can reduce our dependence on these minerals with the help of other substitutes. अलग अलग और चीजों पर डिपेंडेंस बढ़ाकर इन सब पर अपने डिपेंडेंस को हम घटा सकते हैं। और जब इन पर डिपेंडेंस घटेगी मतलब इनका यूजेज भी घटेगा, और जब इनका यूजेज घटेगा तो मतलब ऑलरेडी अपने आप इनकी कंजर्वेशन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इनका इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया, दूसरी चीजों पर अपना डिपेंडेंस बढ़ाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स dependence on the renewable resources and reduction in the dependence on non renewable resources। और जब इन पर डिपेंडेंस घटती जाएगी और उन पर डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी, उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स होनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने थर्मल पावर की जगह दूसरी चीजें यूज करनी शुरू कर दी, आपने मेटल्स की जगह कुछ और बनाना शुरू कर दिया, उसको यूज करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ है? आपकी धीरे धीरे इन पर डिपेंडेंस जो है घटती जाएगी, इनका यूजेज भी घटता जाएगा, और जब यूजेज घटता जाएगा तो डेफिनेटली इनकी कंजर्वेशन होती जाएगी। That is why we are saying that usage of other substitutes can also lead to the conservation of minerals. Is that clear, students? These were some of the steps that can lead to the conservation of minerals. So this was our topic. Now, next topic is बच्चों energy resources. Very important topic. मेरे को लगता है we have already discussed it earlier when we had started the chapter. We had discussed it. ठीक है? कि what is meant by the term energy resources? चलो लिखो फिर क्वेश्चन. Write the question please. What is meant by the term energy resources? Give example. What is meant by the term energy resources? Give example. ये when the chapter had started, when the chapter was started, we had discussed it very deeply. Energy resources. आपको याद होगा, in the previous videos I had told you that energy resources are those minerals that give energy to other minerals. Those are known as energy resources. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वो भी मैंने बताया था, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आई थिंक यू all have remembered it now. Coal, petroleum and natural gas, these are the three energy resources that give power, that give energy to other minerals, and that's why these are called energy resources. ठीक है? You can write down the definition also. Please write down the definition and underline in your books also. Energy is required for all activities. It is needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles, drive machinery, industry, etc. चलो इसका definition आपको बुक में directly नहीं लिखा हुआ. Please write down the definition. The minerals. Please write down बच्चों the definition. The minerals that provide energy to the other minerals are known as energy resources. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज. एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ये डेफिनेशन, दीज आर द एग्जाम्पल्स कि ऐसे मिनरल्स जो दूसरे मिनरल्स को एनर्जी देने का काम करते हैं, दोज आर नोन एज एनर्जी रिसोर्सेज. जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल तब भी हमने डिस्कस किया था, दैट सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ योर बाइक. योर बाइक इज मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील. आयरन एंड स्टील इज अ मिनरल. ठीक है? आयरन स्टील इज मिनरल, बट until and unless we fill the fuel tank with petroleum, unless we fill the tank with petroleum, that bike will never work. We have to give energy. We have to give energy to our bike with the help of this energy resource. And after getting energy from this energy resource, your bike, which is made up of iron and steel, can work. So that is why we are saying that petroleum is a energy resource that gives energy to another mineral. Similar is the example of coal. Take the example of steam engines. Steam engine example, that the steam engines were made up of iron, which is a metal, which is a mineral. Okay, now tell me, without coal, can those steam engines work? No, they can never work. When they get energy from coal, then they work. Then the steam engines made up of iron work, because they are getting energy from one energy resource, that is coal. So that is why coal is also an energy resource that is giving energy to other mineral. Is that clear? Similar is the case of natural gas. आपने सभी ने आज के टाइम में वो देखी होगी CNG buses, CNG auto rickshaws. ठीक है? That CNG gas is made up of this natural gas.
So all those auto rickshaws, all those buses which are made up of iron and steel are working because they are getting energy from this energy resource. That is why they are working. And all these energy resources, coal, petroleum and natural gas, are those minerals that provide energy to the other minerals, and that is why we are calling them energy resources. ऐसे मिनरल्स जो खुद दूसरे मिनरल्स को एनर्जी देने काम करते हैं, जिनकी वजह से बाकी मिनरल्स काम कर रहे हैं, दोज मिनरल्स आर नोन एज एनर्जी रिसोर्सेज. एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द एग्जांपल. डन. चलो उसके बाद देखो बच्चों, ठीक है, आई एम रबिंग इट नाउ. अच्छा जी. नाउ बेटा एक और राइट द क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन लिख लिया, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एनर्जी रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एक्सप्लेन देम. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एक्सप्लेन देम. ठीक है जी, और करके लिखो. और डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी and non-conventional sources of energy. Distinguish between conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy. चलो ठीक है जी. अच्छा, नाउ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन वी हैड रिटन दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. फर्स्ट टाइप, नंबर 1 कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नंबर 2 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसकी हेडिंग बना लेना. Number 1 conventional sources of energy, number 2 non-conventional sources of energy. Now first we shall discuss about conventional sources of energy. Which are these conventional sources of energy? These are coal, petroleum and natural gas. Also firewood. ठीक है जी, दीज आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये ऐसे रिसोर्सेज, देखो बेटा नाम से क्या पता चल रहा है, व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी के पारंपरिक संसाधन, जिनको यूज करने की जो टेक्नोलॉजी है, जिनको यूज करने का जो तरीका है, वो हमारे पास काफी पहले से मौजूद, काफी पहले से, हमें 200-300 सालों से पता है कि इसको कैसे यूज करना है. फायरवुड को तो हम लोग हजारों साल से यूज करते जा रहे हैं. ठीक है, जो लकड़ी है आपकी, लकड़ी को तो हम लोग हजारों साल से यूज करते जा रहे हैं फॉर कुकिंग, फॉर एवरीथिंग. ठीक है, इसका तो हमें बहुत पहले से पता है. इनका यूजेज भी हमने 300-400 साल से इसका यूजेज हम लोग कर रहे हैं. तो दैट इज वाई दीज आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. The sources about the uses of which we know about for the past 200 to 300 years. That is why these are called conventional sources of energy. Now these are non-conventional. इसमें क्या आते हैं? The sources about the usage of which we just come to know for the past 50 to 60 years. These are non-conventional sources of energy, जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता था. For example, I'm telling you an example, like solar energy. Yes, this is a very good example. Solar energy, wind energy, nuclear energy. ये सब These are our non-conventional sources of energy, जिनको इस्तेमाल करने की परंपरा नहीं रही. कन्वेंशन मीन्स परंपरा, और नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक संसाधन. तो इनको यूज करने का तरीका हमें अभी 50-60 ईयर्स पहले पता चला है. हमें पहले से नहीं पता था कैसे यूज करना है इनको. सोलर एनर्जी तो हमारे पास हजारों, लाखों, करोड़ों सालों से, लेकिन सोलर सेल्स बनाने कैसे हैं वो हमें अभी 50-60 साल पहले पता चला. विंड एनर्जी भी हमारे पास करोड़ों सालों से, और विंड मिल्स कैसे बनाने ये अभी हमें 40-50 साल पहले पता चला. न्यूक्लियर एनर्जी भी हमने 50-60 ईयर्स पहले बनानी शुरू की. तो दैट इज व्हाई दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनका इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले से नहीं करते जा रहे थे, हमने कुछ साल पहले से ही इनका इस्तेमाल करना शुरू किया. दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी.
और जो ये है दूसरे कन्वेंशनल सोर्सेज, ये वो सोर्सेज है जिनका इस्तेमाल हमें बहुत पहले से करना आता है। फायरवुड हम लोग हजारों साल से यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोल भी हम लोग 200-300 साल से यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हम लोग काफी पहले से यूज करते जा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दीज आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड these are non-conventional sources of energy. Is that clear, bachcho? This is the basic difference between these two, and both of these are energy resources. Both of these are the types of energy resources. First type conventional sources, second type non-conventional sources. Conventional sources, these one. Non-conventional, these one. Is that clear, students? I think you have got all the points I want to tell you. ठीक है, इसकी definition आपने खुद लिखनी है. We have discussed it. So is that clear, students? So you have to write this question also, that distinguish between the conventional sources of energy and the non-conventional sources of energy. Is that clear? So this was our topic about the energy resources. ठीक है, along with its examples. You have to learn this topic and you have to write these question answers in your textbooks. And still you have any doubts, you can ask from me in the group. Is that clear? So thank you so much, students. Thank you.